आगे कितने लोग हैं? 22. Still 6 people are missing. 5 people. Okay. Good morning, all of you. Once again, we are discussing एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो मैंने नहीं डिस्कस किया था. दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ. प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. अल्काइल हैलाइड. RX मतलब अल्काइल हैलाइड. Alkyl halide is treated with magnesium in presence of dry ether. अभी dry ether क्यों use करते हैं? It is used as a solvent and it is also used to maintain the inertness. मतलब क्या? Magnesium is a highly reactive metal. S block, highly reactive metal. So it can easily react with atmospheric oxygen. It can easily react with atmospheric oxygen, atmospheric moisture. Okay, to prevent those side reactions, we are using dry ether. Dry ether matlab ether which does not contain any moisture. तो इसके लिए उसको ना dry करते हैं, सोडियम डालते हैं उसमें. Okay, so alkyl halide react with magnesium in dry ether. A very interesting reaction is happening. R get inserted in R and X, so that we are getting RMgX. इसको बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम halide. Alkyl magnesium halide, which is nothing but Grignard's reagent. Alkyl magnesium halide, that is nothing but Grignard's reagent. Grignard's reagent. अब ये जो अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड है, it has a characteristic. What is the characteristics of this alkyl magnesium halide? तो ये जो है ना RMgX, इसमें this MgX bond is purely ionic bond, while RMg bond जो है ना, it has partial covalent character. तो ये बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू दिस. तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो Mg अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, सो दैट वी आर गेटिंग व्हाट R माइनस प्लस MgX प्लस. यू नो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, याद करो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. मैंने बताया था तुम लोग की ऑर्गेनिक में, मतलब जो हम लोगों ने सम बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा है, हम लोग बार बार अभी यूज करेंगे. Electron rich species is nothing but what? Nucleophile. So Grignard reagent is a very good nucleophile donor. मतलब वो nucleophile generate करता है. समझ में आया? Okay, so Grignard's reagent is useful to generate nucleophile. Okay, Grignard reagent के इतने सारे applications है ना, मतलब ये चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, ऐसा हर चैप्टर में तुम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अलग अलग एप्लीकेशंस पढ़ोगे. ओके, देयरफॉर विक्टर ग्रिग्नार्ड, जिसने ये डिस्कवर किया, इन्वेंट किया या पहली बार ढूंढा, he got a Nobel Prize for this. विक्टर ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. ओके, अभी आगे देखो क्या होता है. ऐसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूँ. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट when reacted any proton donating substance, any proton donating substance, any. So it may be H2O, it may be any acid, it may be any alkali, it may be weak acid like hydrocyanic acid or carboxylic acid
और मतलब जिसमें जिसमें प्रोटॉन है वो सब, जिसमें जिसमें प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं वो सब जब रिएक्ट होते हैं, ओके, एनीवन, it will always gives you what? RH. RH मतलब alkene. So R minus from here, and all these are giving what? Proton H plus, proton donor. Write down. Yes, done everybody. हो गया सबका लिख के? हेलो, डन? Yes, sir. गुड. तो अभी आगे देखो, तो समझ में आया? मैं एग्जांपल देता हूं. सपोज वी हैव एग्जांपल लाइक दिस वे, CH3. मैं क्वेश्चन देता हूं. हाउ विल यू प्रिपेयर, हाउ विल यू प्रिपेयर A ethane from ethyl chloride B propane from isopropyl bromide C N-butane from 1-iodobutane. सब लोग जाग रहे हैं? विराज, गुड मॉर्निंग विराज. जाग रहे हो विराज भाई? विराज भाई नहीं जाग रहे. चलो ठीक है, देखते हैं. सो इथाइल क्लोराइड कैसे करेंगे? इथाइल क्लोराइड को CH3 CH2 Cl react with what? Magnesium in presence of what? Dry ether. तो ये क्या देगा? CH3 CH2 MgCl. इसको मैं रिएक्ट करता हूँ वाटर के साथ, तो ये H प्लस इसके साथ जाएगा, ये CH2 माइनस, राइट? सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? CH3 प्लस MgCl एंड OH. इथेन मिला. करेक्ट? बाकी तुम लोग कर सकते हो. चलो ट्राई करो जल्दी. हाँ, सो सेकेंड केस में तो अभी हम लोग कैसे रिएक्शन लिखेंगे? बी isopropyl bromide. What is the isopropyl? Write down the name of compound below the structure. तो यहाँ पे इधर नाम लिखो, सब लोग लिखो. isopropyl bromide, isopropyl bromide react with magnesium in presence of dry ether. So what will be the product? CH3 CH MgBr. Now this I am reacting with suppose alcohol. Okay, methyl alcohol. कुछ भी ले सकते हो प्रोटॉन, वाटर भी ले सकते हैं हम लोग. क्या होगा? CH3 CH2 CH3 प्रोपेन प्लस MgBr
and OCH3. तीसरा क्या है? N-butane from 1-iodobutane. 1-iodobutane structure. ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, है ना. 1-iodo मतलब फर्स्ट कार्बन को आयोडीन अटैच रहेगा. दिस इज कॉल्ड एज 1-iodobutane. दैट रिएक्ट विद मैग्नीशियम. क्या होगा? So there must be Grignard's reagent. This is called the Grignard reagent. Remember that. MgI. Okay. That react with suppose vanilla hydrogen cyanide. प्रोटॉन हाइड्रोजन साइनाइड, कोई कुछ भी ले सकते हो. जो प्रोटॉन देता है वो प्रोटॉन डोनेटिंग कंपाउंड. आई कैन टेक HCl और H2O लिया तो भी चलेगा. तो अल्टीमेट अल्केन मिलने वाला है. व्हाट इज द अल्केन? ब्यूटेन. करेक्ट. बाय प्रोडक्ट Mg I and here we have a Cl. Please note down this. ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, अल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन था जो मैंने डिस्कस नहीं किया था. ओके. Chalo, let us go for the next reaction now. That is combustion reaction. Combustion. Combustion is nothing but burning in air. So alkenes, I'll write general formula CnH2n plus 2. When heated in air, they always gives you carbon dioxide and water, and also certain amount of heat is liberated. Q kilojoule heat is liberated. Okay. So here there are n carbons. So I will write n over here. Okay. Now what will you say about hydrogen? कितना है यहाँ पे हाइड्रोजन? 2n plus 2 है. n plus 2n 1 plus 2. But already यहाँ पे क्या है? 2 है. So I should write n plus 1. Correct? तो ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे? 2n और ये ऑक्सीजन हो गया n plus 1. बराबर ना? 2n. So how much is the oxygen? n plus 1 by 2n 2 plus n plus 1 मतलब कितना हो जाएगा ये? 3n plus 1. बराबर ना? ऑप्शन कितना हो गया? ये 2n और ये n plus 1 मतलब कितना हो गया? 3n plus 1. और यहाँ पे O2 है ना? So what should I write?
3n plus 1 divided by 2. Why divided by 2? See, here we are talking about, see, total number of oxygen should be balanced on left hand side and right hand side. अगर मैं ये divided by 2 नहीं करता तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएंगे 6n और 2, 6n plus 2. बट यहाँ पे एक्चुअली ऑक्सीजन कितने हैं? 3n plus 1. Understood? Therefore, what should I write? 3n plus 1 divided by 2. So, अगर समझो मैंने मीथेन लिया CH4 plus O2, that gives you what? CO2 plus H2O. हाँ, हीट भी लिबरेट होगा. इथेन लिया, तुम लोग बैलेंस करोगे ना? O2 gives you what? CO2 plus H2O. ब्यूटेन लिया C4H10, okay, plus O2, that gives you what? Carbon dioxide plus H2. In all cases, obviously different amount of heat is liberated. Therefore, Q1, Q2, Q3, whatever it is. Therefore, alkanes are used as fuel. एलपीजी वगैरह में तो यही तो होता है. एलपीजी, पेट्रोल, डीजल में यही होता है, अल्केन्स ही होता है. ओके, प्लीज ये रिएक्शंस को बैलेंस करना. कर सकते हो ना बैलेंस? डू इट फास्ट. Incomplete combustion. So let us consider methane. Insufficient supply of oxygen. Insufficient supply of oxygen. So that conditions are maintained. Okay, मैं तुम लोग को एग्जांपल बताता हूँ. अपना जो बर्नर है ना, बर्नर, ओके, वो बर्नर में जो होल्स होता है उसमें से गैस आता है. ओके, अगर उसमें पानी वगैरह अटक गया, मतलब जब धोते हैं हम लोग, और अगर समझो वो कुछ होल्स ब्लॉक हो गए, you know that flame is not a blue flame, it turns sometime yellow flame, and that yellow flame पे ना वो जो बर्तन होते हैं, जो वेसल्स, यूटेंसिल्स get black. जब ब्लैक हो जाते हैं, that is nothing but what? that carbon. ओके, तो देखो अगर लार्ज स्केल पे कार्बन बनाना है तो दे प्रिपेयर दिस वे. इनकम्प्लीट, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बंद कर देते हैं ऑक्सीजन को और बर्न करते हैं. ओके, so that it gives you carbon solid plus H2. So this is nothing but your carbon black. Okay, carbon black. Can you balance this reaction? हाँ, यहाँ पे लिखते समय तो मैं ऐसे ही लिखूंगा. क्या ये इनकम्प्लीट कंबशन है? इनकम्प्लीट कंबशन, राइट? ये कार्बन सॉलिड है, मीथेन गैस है, ऑक्सीजन गैस एंड H2O लिक्विड. सो यू बैलेंस इट. यहाँ पे हो जाएगा 2H2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 ना. So I should write 2 here. Is that clear? और इनकम्प्लीट किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है. Sir, O2 already 2 है. Yes. Okay. Then controlled combustion. Alkanes on heating with a regulated supply of oxygen. Okay. At high pressure and in presence of suitable catalyst gives you different products. Okay, gives you what? Different products. ये लिख लिया. ये रिएक्शन अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है बट एनसीईआरटी में है. ओके, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन.
So methane on combustion, limited supply of oxygen in presence of copper at 523 Kelvin at 100 atmospheric pressure. हाँ, कैटलिस्ट याद रखो, कैटलिस्ट याद रखना जरूरी है. Okay, so methane gives you methanol, Thank you, CH3, teacher. methanol. It gives you what? Methanol. Okay. Similarly, same, मतलब मैंने समझा यही लिया. यहाँ पे 2CH3 चाहिए, CH4, यहाँ पे 2CH3OH. Methane on combustion, और मैंने अभी कैटलिस्ट चेंज किया, and I am taking molybdenum oxide, MO2, molybdenum, MO is a molybdenum, MO2O3. Okay, so catalyst जैसे ही मैंने change किया, the product also changes, and that gives you HCHO, formaldehyde plus H2. ये है मिथेनॉल, IUPAC नेम है मिथेनॉल, और फेमस नेम है, कॉमन नेम है फॉर्माल्डिहाइड. ये है मिथेनॉल. ऑल फॉर अल्कोहल, आल फॉर अल्डिहाइड. ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन है इथेन बाय मैंगनीज एसीटेट. इथेन CH3CH3 on oxidation, manganese acetate CH3COO twice Mn. This will give you CH3COOH, acetic acid or ethanoic acid, plus H2O. This is ethanoic acid. Ethanoic acid ये क्या है? कॉमन नेम इसका है एसिटिक एसिड. और बाय द वे इनके भी नाम मैं लिख देता हूँ. इसका नाम है MO2O3, molybdenum, molybdenum ऑक्साइड. इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं CH3COO twice Mn. इसको बोलते हैं मैंगनीज एसीटेट, मैंगनीज एसीटेट. ठीक है, ये तो कॉपर है, ये पता है तुम लोग. और एक रिएक्शन है, पहले ये लिखो, फिर मैं और वो एक रिएक्शन बता देता हूँ. ओके, चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखो. alkanes containing tertiary hydrogen. What do you mean by tertiary hydrogen? Hydrogen which is bonded to the tertiary carbon atom. Hydrogen bonded with tertiary carbon atom. When it is oxidized by using KMnO4, potassium permanganate, okay, at normal temperature, ये normal temperature पे होता है. KMnO4 anyway act as an oxidizing agent. We are getting alcohol. तो ये क्या है? What is the name of this compound? 1 2 3 4, 4 carbon atom. तो पहले मैं इसका IUPAC नेम लिखता हूँ. 1 2 3, 2-methyl propane, 2-methyl propane, or it is also called as isobutane, and this is called as 2-methyl and a 2-methyl
1 2 3 सब लोग ध्यान दे रहे हैं 1 2 3 2 methyl propane to all, or it is also called as third butyl alcohol, है कि नहीं? लिख लो। आज शाम को टेस्ट है, याद है? याद है ना टेस्ट? ऐसे ही याद दिलाया मैंने। चलो जल्दी करो। नेक्स्ट रिएक्शन है आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट रिएक्शन बता रहा हूं मैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म अभी आइसोमेरिज्म में क्या है? देखो, आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिज्म, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन higher straight chain alkenes are converted into branch chain alkenes. Higher straight chain alkanes are converted into branch chain alkanes when heated with anhydrous aluminum chloride. Okay, देखो कैसे रिएक्शन होगा। सपोज n ब्यूटेन है, अगर मैंने इसको हीट किया, अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3 and HCl, हीट किया, हीटिंग, I will have a product. देखो ये था स्ट्रेट चेन N alkane. What is this? N butane. That is converted into isobutane. Similarly, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या है? N pentane. अगर मैंने इसको सेम कंडीशन साथ सेम रिएक्शन कंडीशन साथ सेम, anhydrous AlCl3 in presence of HCl and heat, I will have two products. One is isopentane. Yeah, isopentane. A small amount of, very small amount of neopentane, इसको बोलते हैं neopentane, is also formed. ठीक है, लिख लो जरा। Come on, do it fast. अगर हेक्सेन लिया, हेक्सेन, then what? 1 2 3 4 5, ये सबको समझ में आता है ना कैसे लिखा है मैंने? वो अभी तुम लोग मत पूछना ही है सर यहाँ के कार्बन और हाइड्रोजन किधर है। दिस इज द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। रिवाइज, एन हेक्सेन, कंडीशन, अनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl। अथर्व, राउत राउत, Yes, sir. समझ लगा? Sir. So one structure is this. This is called as the isohexane. 2 methyl pentane। नहीं आया तो कॉमन IUPAC नेम लिखो, प्लस
a small amount of this is also formed 3-methyl hexane. I'm sorry, 3-methyl pentane isomerization. Okay. Atharva Raut is present. Atharva Raut. Sorry, Atharva Raut. Atharva Kazve. Write down this. Chalo. Next, there is one more reaction which is also related with the isomerization. But here, not isomerization, it is from alkane, we are preparing aromatic compound aromatization. N alkanes having 6 or more carbon atoms on heating to 773 Kelvin at 10 to 20 atmospheric pressure in presence of catalyst like vanadium oxide, molybdenum oxide or chromium oxide, okay, supported over alumina get dehydrogenated. Okay, uh, yes. So aromatization. Next reaction है aromatization. मतलब formation of aromatic compound. कैसे? ये देखो. What is this? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Open chain है open chain. This is what? N hexane. This is heated with vanadium pentoxide (V2O5) or chromium oxide or manganese dioxide, sorry, molybdenum oxide, okay, or Cr2O3, chromium oxide.
or molybdenum oxide MO2O3 on alumina. Alumina is also nothing but Al2O3 at 773 Kelvin and 10 atmospheric pressure. There is a formation of structure like this. This is nothing but benzene. Similar, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7. This is nothing but N-heptane. Same condition. क्या है? V2O5 और Cr2O3 और molybdenum oxide MO2O3 on alumina and at 773 Kelvin and 10 atmospheric pressure. There is a formation of this compound, methyl benzene, which is also called as toluene. Okay, please note down this. Lower alkane, when treated with steam and the temperature is about 1000 degrees Celsius, in presence of nickel catalyst, gives you carbon monoxide and dihydrogen. This is the commercial preparation of hydrogen gas. Okay. So, ये एक typical reaction है. Reaction with steam. So methane react with H2O. See the temperature. Huh? Temperature is about 1273 Kelvin, 1000 degrees Celsius. In presence of nickel as catalyst. Nickel. So that we are getting carbon monoxide and hydrogen gas. Okay. Next reaction is pyrolysis. Pyro मतलब heat, lysis मतलब breaking. So breaking of higher alkanes to lower alkenes at high temperature is called as pyrolysis. Okay, pyrolysis. So pyrolysis of alkanes is believed to be free radical reaction. Preparation of oil gas or a petrol gas from kerosene oil or a petrol involves the principle of pyrolysis. It is also called as a cracking. इसको क्या बोलते हैं? क्रैकिंग भी बोलते हैं, क्रैकिंग. ओके, मतलब ऐसा है ना कि जब पेट्रोलियम हम लोग को मिलता है, सो पेट्रोलियम का जब हम लोग डिग्रेडेशन करते हैं, डिग्रेडेशन इज एक्चुअली डन बाय दिस प्रोसेस, pyrolysis. Okay, so pyrolysis or cracking. So let us take the example C6H14 heating at around 773 Kelvin.
See what are the different products we are getting. First of all, we are getting C6H12. C6H12 and hydrogen gas is liberated. तो ये अल्कीन हो गया है ना. उसके बाद C4H8 and C2H6. C4H8 मतलब ब्यूटेन हो गया and C2H6 बस हाइड्रोजन गैस भी रहेगा यार. Okay, then we have C3H6, C2H4 and CH4. C3H6 plus C2H6 plus CH4. ऐसे मुझे अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं. You can get different products. Okay, higher alkanes gives you different alkanes like ये क्या था, हेक्सेन है ना. Suppose we have a C12H26. This is called as a dodecane. Dodecane. 973 Kelvin. See that it's all high temperature reactions. That gives you C7H16 heptane, C5 H12 N-pentane and other products. Please note down this. So now let us see the uses of hydrocarbon. Okay, so ये टेक्स्ट बुक में से मैं ले रहा हूँ, जैसा है टेक्स्ट बुक में से बता रहा हूँ. Uses लिखने की जरूरत नहीं, it is there in a textbook. So the first one is first four alkanes are used as a fuel mainly for heating and cooking purpose. For example, CNG and LPG. So there is a homework for you.
तुम लोग मुझे बताओगे ये सीएनजी क्या होता है, एलपीजी क्या होता है, उसमें कौन से अल्केन्स होते हैं, ओके, और विच वन इज बेटर फ्यूल, मतलब एलपीजी ऐसे करते हैं ना हम लोग, एक मिनट आई टेल यू, ये देखो, सो कौन से फ्यूल्स हम लोग यूज करते हैं बेसिकली। सो हाउस होल्ड में हम लोग यूज करते हैं एलपीजी, बराबर। सम पीपल आर आल्सो यूजिंग केरोसिन, बहुत रेयरली यूज करते हैं, बट केरोसिन। गाड़ी में हम लोग डालते हैं सीएनजी, पेट्रोल होता है और डीजल होता है। डीजल होता है, बराबर। हाँ, सो मुझे तुम लोग बताओगे, ये होमवर्क है कि व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट, मतलब कौन से अल्केन्स प्रेजेंट है, ओके, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट अल्केन्स, constituent alkanes of these fuels, ओके। एक ना और एक में डाल देता हूं यहाँ पे बायोगैस, बायोगैस में भी एक अल्केन होता है, बायोगैस, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये है, which is best fuel or best fuel and why। तीसरा है एलपीजी एंड सीएनजी में बेस्ट फ्यूल कौन सा है, और ऑब्वियसली बायोगैस। थोड़ा इंटरनेट वगैरह पे सर्च करना पड़ेगा तुम लोगों को। बायोगैस एज मीथेन, करेक्ट, ठीक है। तो ये तुम लोग मुझे कब तक सेंड करोगे, आज रात तक। कुछ लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, ये सब मीटिंग में जाने वाला है, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब मीटिंग में जाने वाला है, ओके। तो देखो अभी, first four alkanes are used as fuel mainly for heating cooking purpose, example CNG and LPG। CNG पेट्रोल डीजल, स्पेलिंग बराबर लिखा था डीजल का, are used as a fuel for automobiles। Lower liquid alkanes are used as solvent। Alkanes with more than 35 degrees Celsius boiling point, rather, alkanes with more than 35 carbon atoms, 35 carbon atoms are used as a road surfactant, मतलब कोल्टार जो बोलते हैं ना, कोल्टार। Waxes are high molecular weight alkanes, they are used as a lubricant। They are also used for the preparation of candles and carbon black that is used in the manufacturing of printing ink, shoe polish, etc। Okay, तो ये है अपना alkanes। Here we finish the alkanes। Now let us go for the next type of hydrocarbon, that is nothing but alkenes। हम लोग alkenes के बारे में पढ़ेंगे। Alkenes, what are alkenes? Unsaturated hydrocarbons, क्या ये unsaturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbons containing
one or more double bond. One or more double bond. So they have a general formula CnH2n plus CnH2n. मतलब अगर एक डबल बॉन्ड है तो CnH2n, समझ में? जनरल फॉर्मूला ये है उनका, ठीक है? Alkenes are also known as olefins because the first member, ethylene or ethene, react with chlorine to form oily substance. Aliphatic unsaturated hydrocarbons contains two or three carbon-carbon double bond are known as alkedynes and alketrines. Okay, alkedynes and alketrines. So और एक चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, olefins का मतलब so what I said, alkenes are also known as olefins. Alkenes are also known as olefins. Olefins का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग, ऑयली, ऐसे बोल सकते हैं हम. ओके ना, आइसोमेरिज्म. चलो अभी मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग मुझे बताओ. ओके, क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी structural isomers are possible for a formula C4H8. Write IUPAC name or all. Put your IUPAC name in a chat box. Come on, do it fast. Name of these alkene. So देखते हैं हम लोग कितने हैं, मतलब ये इसका DU निकाला सबने. DU पता है ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 1 माइनस 8 नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, डिवाइडेड बाय 2. सो इसका DU आएगा 1. इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर कंटेन्स 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग. बट मुझे यहाँ पे सिर्फ अल्कीन्स चाहिए, आइसोमर्स ऑफ अल्कीन्स. So I'm not interested in double bond. Sorry, I'm not interested in the ring. Okay. अम्मी ये तो मैंने नहीं पढ़ाया, ये कहाँ से लिखा? सिस पढ़ाया था मैंने, नहीं पढ़ाया था मैंने. ये कहाँ से लिखा, पढ़ा है क्या तुम लोगों ने, स्कूल में पढ़ा था? हेलो, हाँ सब में. ओके, नो प्रॉब्लम. चलो देखो अभी, पुष्कर तुम नंबर टाकला फक्त, स्ट्रक्चर्स नहीं लिहिली. सो देखो स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा, एक रहेगा CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है ब्यूट, 1 इन. उसके बाद CH3, CH डबल बॉन्ड CH, इसका नाम है ब्यूट, 2 इन. देन CH3, ये आ गया एक ब्रांच, डबल बॉन्ड CH2,
This is called as 2-methyl propene. Structure 1 and structure 2 are position isomers. Position isomers. Structure 1 and 3 and structure 2 and 3, they are chain isomers. Yes, बराबर है, करेक्ट. चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस. अभी मैं और एक चीज तुम लोगों को ऐड करूंगा यहाँ. सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट द शेप ऑफ, मतलब ये हम लोगों ने किया ऑलरेडी, एक बार वापस मैं समझा रहा हूँ इसको. हाल अपना केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने ये किया था. सो इथीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा? डबल बॉन्ड. सो कार्बन, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन. जो लोग एब्सेंट है उनके लिए ये रिवीजन हो गया. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 1s2, 2s2, 2p2. सो बॉक्स फॉर्म में ऐसे लिखूंगा मैं. जिन लोगों को ये पता नहीं है, वीडियोस देख रहे हैं ना सब लोग, हाँ सब लोग वीडियोस बार बार देखो यार. मतलब मतलब उससे नुकसान कुछ नहीं होगा. हाँ होगा तो फायदा ही होगा. उसमें भी अगर कुछ चीजें हैं, सर ये आपने बताया नहीं, सर ये आपने गलत बताया, प्लीज कम्युनिकेट, टेल मी, सर ये वीडियो में आपने ऐसे लिखा था, उसमें डेट डाला हुआ है, तो उसको मैं उस तरीके से रेक्टिफाई कर सकता हूँ. एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन. और मैं बताऊं ना, डेली एक वीडियो देखो ही देखो, डेली. यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा. सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? 1s2. ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2s1. मतलब जो लोग नया एडमिशन लिए और दोज हु आर देयर फ्रॉम में, सब लोग. नाउ here what is happening, there is a mixing and recasting of 1s and 2p orbital, so that the hybridized state electronic configuration क्या होगा? 1s2. ये तीन ऑर्बिटल एक साथ आ जाएंगे. And this orbital is remain unhybridized. So these are what? These are called the sp2 hybrid orbitals, right? और ये है अपना अनहाइब्रिड ऑर्बिटल. अनहाइब्रिड ऑर्बिटल. सो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, तो उसके साथ ये ऐसे बनता है ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर, ऐसे. ओके. और मैं all these bonds must be same, sorry, all these orbitals must be of same size. और उसमें एक जो ऑर्बिटल है वो रहेगा, मतलब ये sp2 है, sp2 है, sp2 है. और ये जो ऑर्बिटल है, दिस ऑर्बिटल इज, सॉरी एक मिनट, थोड़ा मैं अलग लिखता हूँ. These are all sp2 hybrid orbitals. दूसरा कार्बन, ओके, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो ये सिग्मा बॉन्ड बना दिया. sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 hybrid orbital. Now these sp2 hybrid orbitals are, these are overlapped by hydrogen H, H, C2H4 बना ना, correct? Still there is a one valency remain.
है ना, एक वैलेंसी और बचा है। सो उसमें ये पतला वाला पी ऑर्बिटल है, तो इसको ना मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, ऐसे। ओके, शेयर दीज नोट्स विथ यू, डोंट वरी। ये लिखना मत, सिर्फ समझ लो अभी। ऐसे। सो दीज आर अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स। तो ये क्या करेंगे, दे ओवरलैप। अभी ये दूर दिख रहा है बट एक्चुअली द डिस्टेंस इज वेरी क्लोज। सो दे laterally overlap on each other, laterally, so that there is a formation of what, pi bond. इसलिए ये स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये एक ही पाई बॉन्ड है। दिस इज वन वन ऑर्बिटल वन बॉन्ड, रिमेंबर दैट। एच एच, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 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 और ये पाई बॉन्ड। ये जो बॉन्ड एंगल है, दिस बॉन्ड एंगल is 120 degree, this bond angle is also 120 degree, तो ये भी 120 होगा ना। it is there, we already discussed this, so I don't want to discuss it again, सिर्फ समझाने के लिए कैसे बनता है। so what I want to tell you, देखो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो चार हाइड्रोजन है दे आर इन वन प्लेन, बराबर। एंड ऑन दैट बेसिस अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट, दैट इज geometrical isomers, geometrical isomerism। isomerism arises due to restricted rotation system, due to spatial arrangement of atoms or groups around restricted rotation system is called as geometrical isomerism। अभी ये restricted rotation क्या है, restricted rotation system क्या है? याद है मैंने तुम लोग को कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बताया था, और वो कैसे रोटेट करते हैं ये भी मैंने तुम लोग को समझाया था। बट अगर समझो, अब ये देखो, ये जो बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड वो कैसे बना है, यहाँ पे मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये ऐसे पाई बॉन्ड बना है ना। So I'm just taking a liberty to explain you this way। तो अगर समझो मैंने इस कार्बन को फिक्स रखा है और इसको मैंने रोटेट करना चाहा, रोटेट मतलब इसको, रोटेशन ऐसे ही होगा ना, एक कार्बन को फिक्स रखना है और दूसरे को मूव करना है। रोटेट करना चाह तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। बट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कैसे था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में आई कैन रोटेट दिस सिग्मा बॉन्ड ना, इसको मैं रोटेट कर सकता था। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्री रोटेशन सिस्टम, और इसको क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, बराबर है। तो ये एक हो गया, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम है. C double bond O, okay, then C triple bond N, then अपने ये rings cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, ये cyclic structure, etc. These are all what restricted rotation system. क्या ये? All these are restricted rotation system. रिस्ट्रिक्शन है ना, समझ में आ रहा है? देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन एंड बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन देयर इज अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और एटम. ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है. सिग्मा बॉन्ड को मैं फ्रीली रोटेट कर सकता हूं. ठीक है, ये लिख लो जरा. चलो, आई होप एवरीबॉडी हैज डन दिस. यस, गुड. नाउ, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर समझो मैंने, चलो देखो इधर अभी, suppose if I am writing a structure like this way, A, B, A, B. ध्यान से देखना ये दो स्ट्रक्चर्स को. Are they same? Are these two structures are same? No, sir. They are not. Correct? And interestingly, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर, इसमें जैसे देखो अल्केन में जब मैं रोटेट कर रहा था थ्रू 60 डिग्री सेल्सियस, वी आर गेटिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. Special array, they are interconvertible because the energy gap between them is very small. But here they are two different structures which are not interconvertible. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दो अलग अलग सिस्टम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, they are differing in a spatial arrangement of groups. ये देखो ये restricted system है जिसको ए और बी अरेंजमेंट देखो कैसे है. ए अपोजिट है, बी अपोजिट. ओके, देयरफॉर these two structures are geometrical isomers of each other. ओके, जीआई मतलब ज्योमेट्री, तुम लोग फुल फॉर्म लिखना, geometrical isomers of each other. Okay, now what are the characteristics of these geometrical isomers? First point, they have same molecular formula. They have same molecular formula. Second, they have same du, degree of unsaturation same रहेगा. Right? Third point, same structural formula. Same structural formula. मतलब they are not structural isomers of each other. Fourth one, same IUPAC name. Same IUPAC name. And what? Different orientation. Different orientation. Okay. So it arises due to the difference in arrangement of group, atoms or group present at the restricted rotation system. Okay. आगे देखो. The compound which show geometrical isomers,
द कंपाउंड्स, मतलब अल्केन्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, अल्कीन्स के बारे में. सो द alkenes which show geometrical isomer. ध्यान से देखना. हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, which of the following compound will show geometrical isomer. तो इसमें होता है, देखो, ओके. सो वी हैव A, B, A, B, A, B, B are on same side. इसको बोलते हैं cis. And A, B, B, A, B, B are on opposite side. It is called as trans. Or I can also write C double bond A, B, C. ये क्या है? cis. Same side. ये अलग अलग है, but same group on same side. C double bond A, C and B. This is nothing but trans. Okay. तीसरा देखो, C double bond C. अभी ये अपने सिलेबस में नहीं है. A, B, C, D. जैसे चार अलग अलग है. ओके. सो दीज आर कॉल्ड एज, मतलब इसको बोलते हैं EZ. शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर called as EZ. ओके. मतलब ये नहीं पढ़ा तो भी चलेगा. इट इज नॉट देयर इन अवर सिलेबस EZ, बट मैं बता दूंगा बाद में. अभी इसकी फिलहाल तो जरूरत नहीं है. ये समझ में आया? ओके. अभी ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा हूं, सी, ध्यान से देखना, ए बी सी और सी डबल बॉन्ड सी, ए बी और सी ए बी. All these structures do not show GI. इसका मतलब मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनो. हाँ, एक कोई तो गायब हो गया. कौन गायब हो गया? हर बार मेरे को अभी अटेंडेंस देना पड़ेगा क्या? द कार्बन एटम, ये कार्बन एटम है जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम वाला. इफ इट हैज सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम, सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम, सेम एटम, कोई भी एक सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स है, then it does not show geometrical isomerism. Is that clear? समझ में आया? लिख लो. ये सबको समझ में आया ना? Presence of carbon condition, presence of carbon carbon double bond. Each carbon of double bond should bonded with two different groups in a pair of geometrical isomerism. The distance between similar group changes. ये एग्जांपल है. हम लोग और एग्जांपल इसके देखेंगे. Okay, Soham, it was said already. Nuclear chemistry. एक मिनट. I'll tell you. ये कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने किए हैं.
हम लोग कुछ एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में वापस करेंगे। यस, हो गया, डन एवरीबॉडी। ये समझ में आया ना ये कैसे किया है? वो ये कार्बन को देखना है, हर एक कार्बन को, कार्बन बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सेम एटम, कार्बन हाइड्रोजन एंड सो एनी वन कार्बन अगर सेम एटम अटैच है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। दिस कार्बन इज बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन एंड मिथाइल, बट दिस कार्बन इज बॉन्डेड विथ टू हाइड्रोजन सेम, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। CH2 नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन और मिथाइल, सो यहाँ पे each carbon is bonded with different groups, so it has cis to butene and trans to butene। cis में methyl methyl on same side, यहाँ पे trans, ये देखो ये जो डिस्टेंस है a और ये methyl methyl के बीच में डिस्टेंस है वो अलग है। ये थर्ड रूल का कंडीशन का मीनिंग हो गया। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय।